Now question 13 is what we are going to do. Now write the journal entries of business commenced by Shri Maulik Shah in the name of Shah Traders. So in the name of Shah Traders, so you write the heading journal entries in the books of Shah Traders. Now 2014 July 1. Bought 50,000 cash, debtors 20,000, stock of goods 10,000 and creditors of 5,000 and commenced business. So assets भी ला रहा है, liability भी ला रहा है. So first we write the asset. So over here. So cash account debit 50,000. Debtors account debit 20,000. Stock of goods account debit 10,000. To creditors 5,000. And to capital. Now let's see the difference. 50, 20, 10 is 80 minus 5. So capital account credit 75,000. Right now we are not writing the narrations because we want to cover maximum transactions, but you always have to write the narrations. Any doubt in this? Should I proceed to the next one? Okay, now deposited cash with Vijaya Bank and opened account. So second, we deposited cash 20,000 and opened a bank account. So bank is the receiver, debit the receiver. To cash goes out, cash account, credit what goes out. Third, goods of 20,000 purchased from Sumul at 10% trade discount, 10% cash discount, paid half amount by check. खुद करो working, खुद करो, okay? And then you see the screen. %10 cash discount. Here it is check paid. And amount still payable is 18 minus 9, 9,000. So we can make entry from this itself. Purchase debit dash credit, credit and credit.
amount payable to Sumul. Now, let's make the entry. Purchase account debit 18,000 to Sumul account 9,000 to bank account. We paid by check 8,100 and to discount account 900. Always do the working. Done all of you? Should I go to the next one? A furniture of 15,000 purchased on credit from Puneet Furniture Mart. A carriage of 100 is paid in cash. तो कैरेज को अलग से दिखाएंगे या फर्नीचर में ऐड करेंगे? फर्नीचर में ऐड करेंगे। फर्नीचर में ऐड करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू पुनीत फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,100 to Puneet's Furniture Mart 15,000 and to cash account 100. Fourth, furniture account debit 15,100 to Puneet Furniture Mart 15,000 to cash account 100. अगर ये परचेज गुड्स होता तो क्या करते? अगर ये परचेज गुड्स होता तो क्या करते? तो अलग से मेंशन करते। हाँ, तो अलग से एंट्री आता कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. इज दिस क्लियर? तो कोई भी असेट रिलेटेड है एक्सेप्ट गुड्स, ओके, तो उसमें हमें जो भी खर्चा होता है उसको उसके कॉस्ट में ऐड कर देना है. समझ में आया सबको? ओके. नाउ डिफेक्टिव गुड्स ऑफ 3,000 रिटर्न्ड टू Sumul. So we are returning it to Sumul. So Sumul is the receiver. Debit the receiver. 3,000 and goods goes out. कौन से goods जो हमने परचेज किए थे? So to purchase return account 3,000. Next, goods of 12,000 sold to Rajshri at 10% trade discount, 10% cash discount, paid half the amount by check. So let's do this. Working karo. Goods sold wala. Six. 12,000 के गुड्स सोल्ड किए, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट. So 1,200, 11,000, 10,000, 800. Half amount received or settled, so 5,400. Again cash discount 10%, 540. 4,860. Check received. Now amount receivable
from Rajshri. A minus B, so 10,800 minus 5,400, 5,400. Now, sales is always credit, dash, debit, debit, debit. Rajshri is the receiver, debit the receiver, check received, bank is the receiver, and discount given is our expense, so debit the expense. Let's write this entry, Rajshri account debit 5,400, bank account debit 4860, discount account debit 540, to sales account 10,800. Now let's go to the eighth one. Let me check. Yes. Now eighth one. Goods of 15,000 sold to Mahindra on cash. Underline कर लो on cash. On cash at 10% trade discount, 10% cash discount. तो यहाँ पे कौन से डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे? ओनली ट्रेड, ओनली कैश और बोथ? both, बोथ both. कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज कैश है तो कैश डिस्काउंट भी आएगा और गुड्स सोल्ड है तो ट्रेड डिस्काउंट भी आएगा. सो वी हैव टू डू बोथ. सो लेट्स डू द वर्किंग. गुड सोल्ड का वर्किंग करेंगे हम. एट वन 15,000, 10%, 1,500, 13,500 is sales. Now your half amount nahi, full amount received या settled. So 13,500 का 13,500 पूरा minus cash discount 10%, 1,350. Now your cash received 1,2,150. Amount receivable from Mahindra nothing because A minus B, it will become 0. So here we pass the entry, sales is credit, then cash discount debit and cash received also debit. Cash account debit 1,2,150, discount account debit 1,350, to sales account 13,500. Go through the entries if you have any doubt.
Okay, now withdrawn goods of 3,000 and cash 200 for personal use. Now personal use के लिए owner 500 rupees यानी 300 goods और 200 cash लेके जा रहा है. So owner is the receiver for 300 goods, worth rupees goods and 200 rupees cash. So 10th one, drawings account debit. 500 गुड्स कहां से लेके जा रहा है, जो हमने परचेज किया था वहां से. सो परचेज अकाउंट 300 एंड टू कैश अकाउंट 200. Owner is the receiver, debit the receiver, goods goes out and cash goes out. Okay, now 11th one, purchase plastic bags of 200 for goods packing by cash. तो पैक करने के लिए प्लास्टिक बैग खरीदा है हमने गुड्स को पैक करने के लिए, तो पैकिंग एक्सपेंस 11. पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. Sir, આમાં miscellaneous expense આવે? नहीं आवे केम के आदे ने गुड्स લખ્યું છે ફોર ગુડ્સ પેકિંગ એટલે. Okay, you write packing expense only. Or to cash. It's a goods related expense, that's why. Right, packing expense. Now 2,000 paid by check for salary and wages. So very simple. Transaction date is 12. Salary and wages. Account debit. You paid by check. It means money goes from your bank account. Bank is the giver. Credit the giver. Bad debts took place 300, which was due from Rajshri, and received remaining amount in cash. Bad debt took place rupees 300, which was due from Rajshri, and remaining amount received in cash. तो पहले राजश्री को ढूंढो, किधर है राजश्री. So राजश्री से how much we had to receive? 5,400. यहाँ पे वर्किंग में भी हमने लिखा है अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम राजश्री 5,400. उसमें से कितना बैड डेट हो गया, उसमें से bad debt took place 300, which was due from Rajshri, and received remaining amount in cash. So bad debt is 300, cash received 5,100. So 13. Bad debts account debit 300, cash account debit 5,100, and 2 Rajshri account credit 5,400. Next, due to additional requirement of fund, 12% loan of 25,000 obtained from Axis Bank. Now we are taking a loan from the bank, so this money
is going to directly our bank account. Okay, बैंक कभी भी किसी को लोन कैश में नहीं देता है. Okay, they will always give a check. So this check will be deposited in our bank account. So 14. Bank account debit 25,000 to 12% Axis Bank loan account 25,000. फिफ्टीन को इम्पोर्टेंट मार्क करो प्लीज. Goods of 2000 destroyed by fire, for which insurance company has admitted claim of 1500, realized 200 from goods burnt by fire. यानी 2000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, 1500 हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे, 200 रुपए हमें मिल गए जो डैमेज गुड्स हमने बेचे उससे. तो नुकसान कितने का हुआ? 300 रुपीज का. सो 300 रुपीज का जो नुकसान है, ओके, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा. ओके, लॉस बाय फायर. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट. $1,500. Insurance company is the receiver or acceptor of claim, so debit the receiver. Then cash comes in, cash account debit 200. Loss by fire account debit 300. Now ये जो goods destroy हुआ वो कहाँ से destroy हुआ? हमने जो खरीदा था उसमें से डिस्ट्रॉय हुआ. सो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 2000. नाउ 16 अगेन इंपॉर्टेंट, ध्यान देना प्लीज. Both life insurance premium of Sun 450 and fire insurance premium of 550 paid by check. Life insurance premium of Sun 450 and fire insurance premium 550 paid by check. Now life insurance premium business expense है या personal expense है? Personal. और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम Business. एक्सपेंस. तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ड्रॉइंग्स. सो 16th ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. देन फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Let's write the amount 450, 550. $450, 550, 1000. Underline this. 18th, Nirma company gave 30 number of soap free of cost as sample, which are sold for 250. हमें फ्री में सैंपल मिला, हमें फ्री में सैंपल मिला, तो वो नॉन इकोनॉमिक है.
पर यही फ्री सैंपल, देखो कितने स्मार्ट होते हैं इंडियंस, क्या किया, सैंपल्स बेच दिए, तो कितना पैसा मिला हमें, 250. सो डायरेक्टली इट्स अ एंट्री फॉर सेल्स. सो 18th कैश अकाउंट डेबिट, 250 સર sales એટલે account. 250 એક પીસ ના ને એટલે એવા 30 વેચ્યા ને કે 250 એટલે 30 પીસ ના Total they are sold for 250. Okay, એવું આપ્યું છે પર પીસ? ના. નહીં આપ્યું. Now 20th, देखो राजश्री जिसके लिए हमने 300 रुपए बैड डेट माना था और राइट ऑफ कर दिया था, अब रिसीव्ड 100 फ्रॉम राजश्री फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, यानी पहले जो हमने बैड डेट रिटर्न ऑफ किया था वो पैसा अब रिकवर कर लिया हमने. सो रिसीव्ड कैश 20th. So what comes in? Cash comes in, cash account debit, 100 rupees. 2. Bad debts recovered or return account, 100. Now over here you please don't write to Rajshri account because Rajshri का हिसाब क्लोज हो गया था. जो मिल गया वो हमने उसके नाम के सामने लिख दिया, जो नहीं मिला वो उसके नाम के सामने से हटा दिया. तो राजश्री का कोई भी हिस्सा बाकी था नहीं, पर अचानक 100 रुपए आए, so this is recovery of our bad debts. That's why we use to bad debts return या to bad debts recovery account. Please be careful in exam. Okay, in case of bad debts return of earlier, now recovered, now received, please use bad debts return account only. Next, Axis Bank has charged loan interest of rupees 250. Axis Bank has charged loan interest 250. So 250 we have to pay to the bank for the loan what we had taken. So over here, just a minute. Let's record the entry. Axis Bank has charged loan interest of 250, 25th. Now over here, there is a typical point that we are actually not paying the interest. It has just charged us. So now this is what we will have to pay to Axis Bank. So write the entry. जैसे उसने चार्ज किया हमारा खर्चा हो गया. So interest on Axis Bank loan account debit 250. और क्रेडिट किसको करेंगे, हमारे लोन अकाउंट को करेंगे, बिकॉज अब हमें पे करना है लोन अमाउंट जो हमने लिया था 25,000 प्लस वी ऑल्सो हैव टू पे रुपीज 250. सो टू 12% Axis Bank's loan account 250. Please mark this important. ये इंटरेस्ट पे करना है. ओके, पे किया नहीं है, हैज चार्ज. ओके, एक्सिस बैंक ने चार्ज किया है और चार्ज किया इट मींस हमारा खर्चा हो गया. नाउ वी हैव टू पे दिस मनी टू एक्सिस बैंक. नाउ 28 अगेन मार्केट इंपॉर्टेंट. हेलो सर. सर हाँ सर, मैंने 25th नहीं समझ पड़ी. 25th માં એવું છે કે એક્સિસ બેંક હેઝ ચાર્જ લોન ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ 250. એનો મતલબ માની લે કે તે એક્સિસ બેંક થી લોન લીધી 25,000 ની, તો બેંકે તને
એવો એક મેસેજ મોકલ્યો કે તારા 250 રૂપીસ અમે ચાર્જ કર્યા છે. એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે now you will have to pay towards your loan 25,000 plus you will also have to pay this additional 250 rupees. Now what is this additional 250 rupees? It is your interest. એટલે એ તારો ખર્ચો છે. એટલે interest on loan we debited and we credit Axis Bank's loan account. Okay. Got it? Yes, sir. Okay. Now next, pay 2,000 for painting work of personal building and 1,000 for painting work of shop. Now over your personal building का pay किया तो it is drawing, but shop का अगर हमने pay किया तो it is our business expense. So let's write 28 drawings account debit 2,000. You can use account over your repairs and maintenance account, or you can also use shop expense because that is also given in the textbook. So you can use either of them. Both are correct. I'll use shop expense. More suitable as per me will be repairs and maintenance. Okay. स्कूल में क्या कराते एक बार चेक कर लेना. 1,000 to cash 3,000. Paid internet connection deposit. The word over here is deposit. Underline करो deposit को. Underline करो deposit को. Deposit यानी जब हम connection cancel करेंगे तो ये deposit हमें वापस मिल जाएगा. Is this clear? तो यहाँ पे we use the name of the account 29th में internet connection deposit account debit just a minute 2,000 to cash account 2,000. Sorry, it's paid by check, so to bank account. Now close this, do the total. Total करो सब. Two lakh 2,100. Are you getting the same total? Please do it on calculator.
So 2,02,100 is final. Okay. So now बिकॉज कल छुट्टी है तो मैंने तुमको जीएसटी का लेक्चर देखने के लिए दिया है. ओके, दैट इज चैप्टर नंबर 3. तो ये जो जीएसटी है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और अभी तो यही टैक्स है जो इंडिया में है और रहने वाला है. पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, उन सबको कंबाइन करके ये टैक्स बना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो मेरा लेक्चर प्रॉपरली देखना. Okay, this is the tax which you are going to face further in your academics also, and this is the tax which you are going to face even in your real life situation when you go and buy things or when you go and avail services. You will में तुम सब ने जब फीस भरा तो तुम्हें जो रिसिप्ट मिला है वो रिसिप्ट देखना, उसमें GST लिखा हुआ है. 9% फॉर स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज गुजरात हमारे लिए, and 9% is for central government, यानी for the center. तो SGST, CGST कोई भी बिल में तुम देखोगे तो तुम्हें ये दो मिलेगा, बिकॉज ये गुजरात के अंदर का है. गुजरात के बाहर का कुछ भी है तो वहां पे लिखा होता है IGST. तो विद इन स्टेट तो CGST और SGST, आउटसाइड द स्टेट इट इज IGST. ओके, तो अब यही टैक्स तुम्हें पढ़ना है. तो तुम टेक्स्ट बुक में भी जो चैप्टर दिया है उसका थियोरी प्रॉपरली पढ़ना, मेरे लेक्चर बराबर सुनना, और उसके अंदर मैंने डायग्राम्स भी दिए, रेट्स भी दिए. तो आई हैव ट्राइड टू make the lecture very informative where you get the basic idea of GST. Now, in this chapter, journal entry, we also have entries with GST. Okay, that is what next we are going to see. Now, in my lecture, I have made a table. Okay, कि जब हम खरीदते ओके विद इन द स्टेट तो कौन सा GST का अकाउंट यूज करते हैं, जब हम बेचते हैं विद इन द स्टेट तो कौन सा यूज करते, आउटसाइड द स्टेट कौन सा यूज करते, सर्विसेज लिया यानी खर्चा हुआ तो कौन सा GST का अकाउंट. ओके, और इनकम के लिए कौन सा GST का अकाउंट. तो ये सब का मैंने एक टेबल बनाया है, तो तुम्हें वो टेबल भी देखना है और वो टेबल तुम्हें लिखना है. इफ यू सी इन द होमवर्क आई हैव गिवन टेबल ऑफ GST, तो उसमें वो सब तुम्हें लिखना है और प्रॉपरली लर्न करना है. नाउ माय लेक्चर विल बी ऑन वेडनेसडे. ओके, तब तक ये लर्न कर लेना, बराबर लेक्चर देख लेना. ओके, आई विल गिव यू अ ओवरव्यू ऑफ इट and then we will start with the sums connected with GST. Is this clear? जिन लोगों ने लेक्चर देखा है उसको, उनमें से किसी को कोई इसमें डाउट डिफिकल्टी है? देखा ही नहीं होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, नहीं देखा तो आज देखो और बार बार देखो. And it's a very good lecture, and every citizen should know about GST. Okay, this is money going out of our pocket to the government. So you should know कि गवर्नमेंट जो टैक्स हमसे कलेक्ट करता है वो क्या है. ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है. ओके, यानी हम खर्चा करते हैं और पता भी नहीं चलता कि टैक्स भर दिया. तुम जो भी दुकान से खरीदते हो जहां MRP लिखा है उसके अंदर GST आ ही जाता है. So you are paying for the product, you are also paying taxes to the government. So this is an indirect tax. कि टैक्स दे भी दिया और पता भी नहीं चला. बट ऐसा डायरेक्ट टैक्स भी है, दैट इज इनकम टैक्स. तो वहां पे हमें खुद जाके पैसा भरना पड़ता है टैक्स का, कि इतना मेरा इनकम हुआ, अब इतना टैक्स गवर्नमेंट को जाके भरो. ओके, तो दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स इज राइट नाउ GST. इनडायरेक्ट टैक्स इज कस्टम्स. कस्टम यानी हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें जो ड्यूटी लगता है, दैट इज बेसिकली ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स. तो तुम्हें ये सब कंसेप्ट सीखना है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है. इनफैक्ट अगर तुम्हारे फैमिली में भी किसी को GST का इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरा ये लेक्चर देख सकता है,
because I have targeted students like you and made the lecture who are very raw and basic, who have just no clue about it. So in a simple language, I have explained. So you can even ask your friends or relatives or those who want to know about GST can watch and understand this concept of GST. तुम्हारे लिए थियरी जो मैंने दिया है वो तो तुम कर ही लोगे, बट वो जो टेबल है एंट्रीज का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट ईयर this concept of GST was introduced newly in our textbook. So earlier journal entry was chapter number 3. Now it has become chapter number 4 along with GST related journal entries. So the third chapter was newly introduced. Again, GST is going to come in the next chapter, that is subsidiary books. तो from accounting point of view also you need to learn. तो वो जो table है, once again I am saying, उसको प्रॉपरली लिखना और उसको लर्न करना रिपीटेडली. ठीक है, तुम्हें कोई डाउट डिफिकल्टी आए तो तुम मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें समझाऊंगा. ठीक है, फिर आई थिंक दैट्स ग्रेट एंड इनफ फॉर द डे. और देख लो लेक्चर्स एंड हैप्पी ओनम टू ऑल दोज जिनका आज ओनम फेस्टिवल है. और अब मैं तुम्हें मिलूंगा ऑन वेडनेसडे. ठीक है, चलो गणपति बाप्पा मोरया. बढ़िया. बाय बाय ऑल.